तो ये जो सोशल मीडिया है ये डालती है। तो बेसिकली क्या होता है जैसे कि सोशल मीडिया है हम एजुकेशन पर्पज से लेते हैं। तो जो हमारे रिक्रूटर्स होते हैं बड़ी-बड़ी कंपनी तो उनके जो रिक्रूटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं हमारी जो प्रोफाइल है उसको देखते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे इसका एक बहुत एग्जांपल पिक आप देखें तो लिंक्डइन। तो वहाँ पे जितने भी टॉप लेवल जो एमएनसीज हैं या बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल वो लोग क्या करती हैं लिंक्डइन पे जो वगैरह होते हैं रिसर्चर्स के या जो बड़े टेक्निकल्स हैं वहां से वो पिक करके दे हायर। इसके अलावा क्या होता है जैसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसको हम इजीली सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग इसमें आप टेलीग्राम पे चलाते होंगे तो टेलीग्राम पे भी क्या होता है बहुत सारे चैनल्स होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के जो कि क्या होता है हमें डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्या होता है बहुत सारे जो लेटेस्ट जॉब्स आते हैं उसमें वो हमको अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है जैसे कि पहले क्या होता था जब हमें सीखनी होती थी तो हम क्या करते थे हम कोचिंग करते थे या किसी से पूछते थे। लेकिन सोशल मीडिया में क्या है अभी हम डायरेक्ट जो ऑनलाइन हमारे पास कोर्सेज हैं या जो वेबिनार्स वगैरह अवेलेबल है वहां से हम डायरेक्ट उन कोर्सेज को सीख सकते हैं। तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया होता है वो हमारे जो करियर डिसाइडिंग हमारा पाथवे है या जो हायर एजुकेशन है उसको इम्पैक्ट करता है। अब जैसे कि कोई भी एस्पेक्ट होता है सोशल मीडिया भी है तो इसके दोनों साइड हैं, पॉजिटिव साइड भी है निगेटिव साइड भी है। तो ये जो सेमिनार था ये बेसिकली जो निगेटिव साइड्स थे उस पे हाईलाइटेड था। 2 दिन आपको बताया गया होगा कि सोशल मीडिया के क्या-क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या-क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ देखेंगे, इसका पॉजिटिव साइड क्या होता है, नेगेटिव साइड क्या होता है। पॉजिटिव साइड जैसे कि मैंने करियर डेवलपमेंट के हिसाब से बोला कि आप जॉब को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जो भी टॉप लेवल हमारी एमएनसीज़ हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो सीईओ हैं या मैनेजर्स हैं, उनसे आप डायरेक्ट एक पर्सनल नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं। अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपका जैसे अगर आप में लाइक कुछ स्किल्स तो आप अपने काम के बाद एक फ्रीलांसिंग सर्विस या एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है जैसे इंजीनियर्स वगैरह हम देखें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो वो क्या करते हैं दे हैव लाइक स्किल्स टू जनरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो वो क्या करते हैं अपना डे का जो भी उनका प्रोफेशनल वर्क होता है उसके बाद में क्या करते हैं दे डू फ्रीलांसिंग। तो वो वहाँ पे आई मीन लाइक दे गिव सर्विस टू अदर्स, दे क्रिएट डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर अदर पीपल एंड देन दे चार्ज सम मनी फॉर दैट। तो वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम। तो इस तरीके से ये सारे पॉजिटिव साइड हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव साइड भी हैं जिसमें पहला नेगेटिव मेन अगर आप देखोगे तो टाइम वेस्टेज है, डिस्ट्रैक्शन है। इसके अलावा क्या है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें हैं वो जरूरी नहीं है कि सारी बहुत सारी चीजें उसमें गलत भी होती हैं, मिस होती हैं या बहुत सारा आप देखो स्कैम्स होता है। दे लाइक बहुत सारी कंपनीज होती है कि दे ऑफर लाइक गुड जॉब या आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए एंड यू गेट गुड जॉब, इज लाइक काइंड ऑफ स्कैम मिस इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा क्या होता है बहुत सारे आप ट्विटर पे भी देखो जो होता है लोग एक दूसरे के लिए करते हैं ना। लाइक अगर आप ट्विटर पे हो तो आपको सारे पॉजिटिव कमेंट यू विल गेट सम नेगेटिव कमेंट नेगेटिव पोस्ट, तो वो फिर क्या होता है आपकी जो रेपुटेशन है उसको कम करता है। तो ये इसके क्या है सोशल मीडिया के नेगेटिव साइड्स है। अब जैसे अभी मोस्टली यहाँ पे एमएससी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को कैसे सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है और क्या उसके नेगेटिव साइड होते हैं अगर हम वो देखें तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है। सबसे पहला जो मेन सोशल मीडिया काम करता है दैट स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एवरीबडी यूज देयर मोबाइल्स और बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने मोबाइल को 1 घंटे से भी कम छोड़ते हैं। ठीक है, हर कोई अपने मोबाइल कुछ करता है, मतलब यू कैन नॉट कीप योर मोबाइल
इवन फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटा आप दूर नहीं रख सकते, आप हमेशा आपके हाथ में मोबाइल होगा, आप कुछ-कुछ चीज़ें उसमें करते रहेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली अ डिस्ट्रैक्शन। और फिर आप क्या होगा, आप उसमें टाइम वेस्टेज करते हैं। अभी जैसे रील्स हो गया है, तो आप क्या करते हैं, इवन अभी हम लोग क्या करते हैं, एक 20 मिनट या आधे घंटे का एक वीडियो भी नहीं देखते हैं। हमको क्या हुआ, छोटा रील देखने का आदत हो गया, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो वी सिंपली स्क्रॉल एंड वी सिंपली सी द रील्स। तो उससे क्या होता है ना, आपका माइंड नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। आप एक क्रिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप नहीं होती है, और आप जो है किसी भी चीज़ों को रैशनली सोचते नहीं हैं। आपको क्या चाहिए, शॉर्ट रिस्पॉन्स चाहिए। सो दैट क्रिएट द वेस्ट ऑफ टाइम, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, आपका हेल्थ इश्यूज भी होगा। अभी आजकल आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे, वो जब खाना खाते हैं उस टाइम पे भी उनको मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो वो बिना मोबाइल के वो खाना भी नहीं खाते हैं, और ये हमारे साथ भी होता है। जो एडल्ट लोग हैं, जो एमएससी पीएचडी वाले, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो खाना खाने के टाइम पे मोबाइल देखते होंगे। तो उससे ये क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। फिर क्या होगा, रात में बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल कंटिन्यूअसली चलाते हैं, 12 साढ़े 12 1 बजे तक फेसबुक या ये सारी चीजें चलाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में एक स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपको रात में ठीक से नींद नहीं आएगी। इसको बोलते हैं इंसोम्निया। और आप अगर इतने स्टेज तक पहुंच गए हैं, तो फिर आपको लास्ट में होगा डिप्रेशन। आपके लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, और आपका अगर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आप अगर टाइमली नहीं सो रहे हैं, आप एक्सेस मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी डिप्रेशन की। और अगर आप फिर डिप्रेशन में जाते हैं, देन फिर आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटीज आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी टाइमली जॉब नहीं लगेगी। लड़कों के लिए लाइक जॉब इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर लाइफ स्टाइल, और आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी रखें। सो हाउ वी कैन यूज द सोशल मीडिया, जैसे अगर आप लेफ्ट साइड में एक फोटो देखें, तो यहाँ पे जैसे एक लड़का है लेफ्ट साइड में, वो अच्छे से बुक पढ़ रहा है, राइट। अब वहां पे अगर उसको कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मोबाइल में गूगल करके आप उसको देखो और अपना डाउट क्लियर करो। सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस यूज ऑफ सोशल मीडिया। सेकंड फोटो में आप देखो, वो सिंपली मोबाइल में लेके या लैपटॉप में लेकर के सिर्फ उस पे ही फोकस है। तो उसमें क्या होगा, आप उस चीज के लिए एक्विंटेड हो जाओगे। आप हमेशा अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए मोबाइल पे डिपेंड करोगे, इवन यू विल नॉट यूज योर ब्रेन। इसका एक और छोटा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, कोई नॉर्मल कैलकुलेशन होती थी या नॉर्मल मैथमेटिक्स है, दे यूज टू यूज देयर ना, नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए माइंड यूज करते थे। अभी हमें क्या है, नॉर्मल कुछ जोड़ना है, 470 प्लस 45, हम उसके लिए भी कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, और वी यूज मोबाइल फॉर सिंपल कैलकुलेशन। तो उससे आपका क्या हो रहा है, आपकी जो माइंड की एफिशिएंसी थी, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग थी, आपकी जो कैलकुलेटिवनेस थी, वो सारी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वी जस्ट हैव टू यूज इट एज अ हेल्पिंग टूल। हमें उसको पूरी तरीके से उस पर रिलाई नहीं होना चाहिए। तो फाइनली क्या होता है, जब हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं मास्टर्स और पीएचडी की बात करूँ, तो उसमें ये सोशल मीडिया हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है या कैसे इम्पैक्ट डालता है, तो वो चीजें हैं इसमें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, तो हमारे बहुत सारे आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो इवन इफ यू डू नॉट हैव गुड टीचर, या हमारे लाइक कॉलेज में अगर कोई उस सब्जेक्ट का फैकल्टी नहीं है, देन वी कैन अवेल सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से हम उस कोर्स को ले सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, कोर्सेरा है, एडेक्स है, उडेमी है, उडेसिटी है, सो मास्टर क्लास है। सो दीज आर सम ऑनलाइन कोर्सेज जहाँ से हम जा करके इसका जो कोर्स है, जो हमारे रिलेवेंट है, जैसे आप लोगों में कुछ लोग एक्सटेंशन से भी हैं, सो जो भी एक्सटेंशन से रिलेटेड कोर्स होगा या कुछ और स्किल जनरेशन का कोर्स है, वी कैन टेक इट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, और उसको हम सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि जो रिसर्चर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम अपने जो आइडियाज़ हैं या जो अपनी जो रिसर्च है उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म होता है रिसर्च गेट। वहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे रिसर्चर हैं अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इंडिया में ही नहीं, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं,
वो उनकी जो प्रोफाइल होती है वो रिसर्च गेट पे बनी होती है। तो वो इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो हम वहाँ पे जा करके उनका क्या रिसर्च हुआ या उन्होंने क्या नई फाइंडिंग्स की, हम वहाँ पे देख सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो शेयर आवर फाइंडिंग्स, हमने क्या चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया या पेपर डेवलप किया, सो वी कैन एक्सचेंज विद दोज पीपल। तो इस तरीके से एक रिसर्च गेट का हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। एंड देन वी हैव सम ग्लोबल डिस्कशंस ऑल्सो, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। और बाकी जो नॉर्मल यूट्यूब वगैरह, उसमें तो आप लोग सभी देखते हैं, कुछ भी अगर हमें चीज़ नहीं समझ में आती हम जाके यूट्यूब में देख लेते हैं। तो यूट्यूब बहुत कॉमन है, और उसके अलावा जो ये प्लेटफॉर्म है जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है, उडेमी है, ये भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू विल फाइंड सम गुड कोर्सेज इन दिस प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि कौन कौन से ऐसे हमारे जो पोर्टल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे मैंने स्कॉलरशिप्स मेंशन भी किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। सो विल डिस्कस वन बाय वन। तो पहला जैसे कि आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दिस इज वेरी कॉमन, जितने भी आप लोग हो मोस्टली स्टूडेंट्स इसके बारे में पता ही है। तो इसके डिफरेंट हमारे लाइक एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च एंड एक्सटेंशन से रिलेटेड आईसीआर के प्रोग्राम्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें जैसे दो शिप्स होती है, जेआरएफ और एसआरएफ की, यू माइट बी नोइंग। तो जेआरएफ जो होता है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए होता है, और एसआरएफ जो होता है दैट इज फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो आईसीआर जो होता है एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप जो है वो एमएससी और पीएचडी के लिए ऑफर है। पीएचडी के लिए अभी आई थिंक इट इज गिविंग अराउंड 42,000 पर मंथ। तो उसमें क्या होता है, एसआरएफ की हमारे पास सीट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। आपको उसका जो आईसीआर का एग्जाम है पीएचडी के लिए वो आपको लिखना होगा। एंड इफ यू गेट गुड रैंक इन एसआरएफ देन यू विल फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी, और वहां पे जाके फिर आपकी जो मंथली फेलोशिप है वो शुरू हो जाएगी। एंड इट्स फेलोशिप इज रियली वेरी गुड। तो उसमें क्या होगा, आप एक खुद का भी आपका सपोर्ट होगा, एंड देन यू कैन प्लान योर थिंग्स इन अ बेस्ट वे। तो अपार्ट फ्रॉम आईसीआर और भी कई सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फेलोशिप ऑफर करते हैं। इसमें एक हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, और यहाँ पे मैंने वेबसाइट भी मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसका फोटो भी ले सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर दीज वेबसाइट्स। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहाँ भी अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स होती है। फीमेल के लिए अलग से स्कॉलरशिप्स होती है। So female candidate can explore these portals also. Now there's a separate fellowship for the female students, and then we have University Grant Commission UGC. तो एक्सटेंशन के जो लोग होते हैं मोस्टली सारे लोग यूजीसी का एग्जाम देते हैं, तो वो नेट के लिए भी चाहिए होता है, फेलोशिप्स भी ऑफर करता है। तो यहाँ पे यूजीसी जो है या एक और सीएसआईआर भी होता है। तो इसका जो बेनिफिट होता है कि ये जो फेलोशिप होता है ये 5 ईयर्स के लिए देता है, जबकि जो आईसीआर होता है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए फेलोशिप 3 साल के लिए देता है। तो यूजीसी के केस में आपको क्या होगा, जो फेलोशिप्स है वो 5 ईयर्स के लिए मिलेगी। एंड मतलब आपके पास एक ड्यू टाइम रहेगा अपनी पीएचडी को आराम से करने का। एंड विद द सेम टाइम यू कैन एक्सप्लोर द जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो आपके लिए एक थोड़ा सा लॉन्ग बैकअप यहाँ पे रहता है। एंड द फेलोशिप टाइम रहती है, तो आपको 2 साल का एक एक्सटेंडेड फेलोशिप यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी क्या होता है, ये भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो एग्रीकल्चर के हैं उसको देता है, और यहाँ भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। सो नेक्स्ट मेन जो स्कॉलरशिप आती है वो आती है डार्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर किसी को जर्मनी में जाके अपना मास्टर्स या डॉक्टरल स्टडी करना है, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो जर्मनी में अगर किसी को अपना हायर एजुकेशन परस्यू करना है तो वो ये डार्ट फेलोशिप को अप्लाई कर सकता है। तो दे ऑफर वेरी, अब ये जो 3 फेलोशिप्स है नीचे की, डार्ट, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एंड फुल ब्राइट, दे रियली ऑफर वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जैसे मान के चलिए 42 है, तो वहाँ पे मतलब इट्स रियली गिव वेरी गुड मनी देयर, लाइक अराउंड 70-80,000 पर मंथ के हिसाब से भी मिलता है वहाँ पे। सो दीज फेलोशिप्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लोर। तो डार्ट जो है ये जर्मनी के लिए है, आपको जर्मनी से करना है तो आप डार्ट फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन, ये है यूनाइटेड किंगडम के लिए। अगर आपको वहां पे जाके अपना मास्टर्स या पीएचडी के लिए आप देख रहे हैं, so you can apply this Commonwealth Scholarship Fellowship.
नेक्स्ट इसमें आता है फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप। तो ये जो होता है ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। हमारे वहाँ आईआरई से काफी लोग इसको अवेल करते थे फुल ब्राइट का। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको एक अच्छा फेलोशिप पैकेज मिलता है, साथ में आपको यूएसए का एक्सपोजर मिलता है। तो फुल ब्राइट नेहरू जो फेलोशिप है ये भी पीएचडी के लिए देखा जा सकता है। और एक और फेलोशिप होता है जो कि आईसीआरई ऑफर करता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस करके नाम है फेलोशिप का। सो दैट इज ऑल्सो पीएचडी प्रोग्राम। तो उसके थ्रू क्या है, वो आईसीआरई उसको हर साल एडवर्टाइज करता है और उसमें 30 एप्लीकेशन पड़ते हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पीएचडी फेलोशिप है, तो वो आपको बाहर फॉरेन के लिए अप्लाई करना होता है। और कई बार उसमें क्या होता है, 30 वैकेंसीज होती हैं और कई बार 30 उसमें जो अप्लीकेशन हैं वो पढ़ते भी नहीं। ठीक है, जैसे लास्ट 3 साल पहले का मुझे एक डेटा याद है, 30 वहां पे सीटें थी और जो एप्लीकेशन पढ़े थे वो 23 ही पढ़े थे, मतलब 7 एप्लीकेशन तो पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वी जस्ट हैव टू ट्राई। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें ये सोच के नहीं करते कि यार हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। वी जस्ट हैव टू ट्राई एंड इफ यू आर रियली लकी इनफ यू विल गेट योर चांस। तो उसमें हर साल 30 वैकेंसी जो होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, वो एडवर्टाइज होती है। एंड दैट इज फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन फॉरेन कंट्रीज एंड यू रियली गेट अ वेरी गुड स्कॉलरशिप देयर। तो वो आईसीआर की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिलेगा, यू कैन एक्सप्लोर दैट। इसके अलावा जैसे रिसर्च गेट पे मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं उन सबका वहाँ पे अकाउंट होता है। सो यू कैन शेयर योर आइडियाज एंड यू कैन सी द अदर्स पीपल फाइंडिंग देयर। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक क्या है, कृषि कोर्स है। तो कृषि कोर्स में क्या होता है, जो थीसिस वगैरह होती है ना, जो मास्टर पीएचडी की हम लोग थीसिस वगैरह करते हैं, तो वो सारी वहाँ कृषि कोर्स में अपलोड होती है। इसके अलावा जो बुक्स वगैरह होती है वो भी अपलोड होती है। तो जैसे आप रिसर्च आपने किया एंड देन यू हैव टू राइट योर थीसिस। तो इफ यू वांट टू टेक लाइक सम बेसिक आइडिया कि कैसे थीसिस लिखते हैं, क्या उसका आउटलाइन है, या मेरा जो टॉपिक है उस पे कोई पुरानी थीसिस है या नहीं। ठीक है, सो इन दैट केस आप जो है कृषि कोर्स में जा करके उसको देख सकते हैं एंड देन यू कैन टेक योर आइडिया कि कैसे थीसिस वगैरह लिखी जाती है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पोर्टल्स फॉर द हायर एजुकेशन। एंड नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है, इसका जो प्रोफेशनल हमारी लाइफ है, लाइक वंस वी कम इन द जॉब लाइफ इधर इन अ रिसर्च फील्ड और इन अ लाइक मैनेजरियल पोस्ट, तो उसमें फिर क्या रोल होता है। तो नेक्स्ट जो रोल आता है आपका सोशल मीडिया का, वो ये आता है कि आप एक बार जॉब में आ गए, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ स्टार्ट हो गया, देन हाउ यू एक्सपेंड योर नेटवर्क, राइट। आप कैसे डिफरेंट जो लोग हैं उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, आपके जो पब्लिकेशंस हैं, या आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ पे आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज आपको हायर देखना है, या एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करना है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर मेड थ्रू सोशल मीडिया। उसमें फिर आप जो नए लोग हैं, जो आपके मेंटर्स हैं या जो आपके लीडर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, आप उनसे कैसे कनेक्ट होते हो। तो इन सारी चीजों को जो सोशल मीडिया है वो उसको एक प्लेटफॉर्म देता है, उसको इजी बनाता है दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन लाइक इफ यू आर इन अ बिजनेस सेक्टर और लाइक इन अ कंपनीज, so you can expand your business opportunities through social media. सो कमिंग टू द जॉब, अगर हम देखें कि जो हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जॉब में क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए बनते हैं। आपने हायर एजुकेशन ले लिया, एमएससी पीएचडी कर लिया, यू हैव अवेल्ड गुड फेलोशिप्स, देन आफ्टर दैट जॉब के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सोशल मीडिया आप डेफिनेटली यूज करते ही हैं, वहां भी आपको जैसे कि टेलीग्राम है या इवन इंस्टा में भी बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो टू दीज वेबसाइट्स और टू दीज पोर्टल्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। तो इसमें जैसे हमने आईसीआर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये क्या है, जो भी डिफरेंट हमारे रिसर्च फेलोशिप्स और जो एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको आईसीआर की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी साइंटिस्ट की जॉब होती है, जैसे मैंने भी लिखा था, तो हमने एआरएस लिखा था, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। तो साइंटिस्ट की जो जॉब है, इसके अलावा एसएमएस होता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, और एक और जॉब होता है एसटीओ बोल के, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर।
तो इस टाइप की जो जॉब होती है ये ASRB से एडवर्टाइज होती है। तो हियर यू कैन सी द वेबसाइट आल्सो, यू कैन टेक द फोटो और स्क्रीनशॉट। तो इन वेबसाइट्स पे आपको जाना है एंड देन अंदर यू कैन एक्सप्लोर। तो वहाँ पे जो इस टाइप की जॉब्स होंगी वो मेंशन होती है। यू कैन सी कि नया जो जॉब है एडवर्टाइज हुआ है नहीं हुआ है, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली फिल द फॉर्म एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसके अलावा जैसे यूपीएससी जो होता है ये भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको एडवर्टाइज करता है। यूपीएससी की अगर हम लाइक एक कॉमन जॉब की बात करें तो जो आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दैट इज एडवर्टाइज्ड बाय यूपीएससी। तो उसमें जो हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट और मास्टर्स, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो रिक्रूटमेंट होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, वो भी यूपीएससी के थ्रू होते हैं। तो उसमें जैसे डिफरेंट पोस्ट होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए, देन सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर। तो इस टाइप की जो पोस्ट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट इज एडवर्टाइज थ्रू यूपीएससी। सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दीज वेबसाइट्स फॉर द एग्रीकल्चर जॉब्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर जॉब होता है वो होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स का इन बैंक्स। तो इस आईबीपीएस है, वहाँ पे ये जो पोस्ट की जो डिटेल्स है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की, ये आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर कोई लाइक बैंकिंग जॉब में इंटरेस्टेड है तो वो इस वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकता है एंड यू विल गेट द पोस्ट देयर। और बैंक का एक चीज तो अच्छा होता है कि ये पोस्ट रेगुलरली एडवर्टाइज करता है। सो इफ लाइक बहुत सारी जॉब में क्या होता है, वो जॉब आती ही नहीं है, मतलब देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया। बट बैंकिंग जॉब में ये होता है कि वो रेगुलरली एडवर्टाइज होते हैं। सो लाइक इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग जॉब देन दे कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। इसके अलावा नाबार्ड जो है हमारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो इस टाइप की जो पोस्ट होती है वो नाबार्ड जो होता है वो एडवर्टाइज करता है। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, जो कि स्टेट डिफरेंट स्टेट्स में एडवर्टाइज होती है। तो उसमें जो उनकी स्टेट की जो पीएससी की वेबसाइट्स होती हैं, आप लोग वहां पे जाकर के उसको देख सकते हैं एंड देन यू कैन फिल फॉर्म अकॉर्डिंगली। इसके अलावा मैनेज की जो वेबसाइट्स है वहां पे जाके एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं एंड देन दे आल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो वो देखा जा सकता है। एंड देन देयर इज अ वेबसाइट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो वहाँ भी क्या है, सेम है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वहां पे जाकर के एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो दीज आर सम लाइक इम्पोर्टेंट यू कैन से वेबसाइट्स फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप उसको जा करके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपकी स्किल के हिसाब से यू कैन एक्सप्लोर दीज वेबसाइट्स एंड यू कैन स्टार्ट फिलिंग दोज फॉर्म्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। सो बेसिकली नेक्स्ट जो चीज वही आती है कि जो सोशल मीडिया है, तो इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो कैसे इसको हम बेस्ट वे में यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन अस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है आप उसको वेरीफाई जरूर करें। ठीक है, हम लोग भी सेम मिस्टेक करते हैं, कुछ व्हाट्सएप हमारे पास आया है तो बिना वेरिफिकेशन के हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट। वी डू नॉट चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो वो चीज आपको एक बार वेरीफाई करनी चाहिए, बिकॉज फिर क्या, अदरवाइज जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी स्प्रेड हो जाती है, राइट। देन प्राइवेसी इज अ इम्पोर्टेंट कंसर्न, ठीक है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। और अगर हम लाइक एज अ स्टूडेंट हैं, एज अ करियर, हम करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रिलेवेंट हमारे फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वे उसके टच में हमको रहना चाहिए। एंड जो भी हम कंटेंट किसी को शेयर करते हैं या कुछ बात करते हैं, दैट शुड बी द मीनिंगफुल, राइट। तो जो भी है, सोशल मीडिया को हमको इस तरीके से इफेक्टिव वे में यूज करना चाहिए। तो कंक्लूजन यही रहेगा मेरा कि जो सोशल मीडिया है, वी ऑल नो दैट इट इज अ पावरफुल टूल, जिसका कि रोल जो होता है हमारे, अगर हम लाइफ में देखें, हायर एजुकेशन, करियर डेवलपमेंट और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रोल है। और दूसरा क्या है, इसके दोनों साइड हैं, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है।
ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन अस लाइक हाउ वी यूज दिस सोशल मीडिया. हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं या निगेटिव एस्पेक्ट कर रहे हैं. तो जैसा हम इसको यूज करेंगे ये हमारे लिए वैसे ही काम करेगा. ठीक है. ये दोनों चीजें ऑफर कर रहे हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन अस लाइक हाउ वी यूज द सोशल मीडिया. तो इसी के साथ मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है समाप्त करता हूँ. और इसमें अगर हमारी कोई क्वेरी होगी स्टूडेंट्स के साइड से तो आई वुड लाइक टू टेक इट. Hello, sir, am I audible to you? हाँ, you are audible. Okay, good morning, sir. This is Jyoti, and I have been the pleasure of being host for this event. So, first of all, thank you so much, sir. It was a very wonderful and productive lecture for all of us. So, thank you once again, and I want if any student want to give feedback. Good morning, sir. Good morning. My name is Sir Mohit, sir. Are you listening me, sir? आप लोग का अगर लाइक कोई क्वेरी है ना, आप आई मीन लाइक अगर आप लोग को कुछ पूछना है यू कैन डिस्कस. Sir, no query, sir. All clear, sir. Sir, helpful this session. Very helpful, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू. Aishwarya ma'am, am I audible to you? Yeah, you are very much audible. Good morning, ma'am. This is Jyoti. Yeah. Please continue, Jyoti. Can we start with the session? If you are ready, then we can start now. Okay. Okay, everyone. So first of all, I would like to all the participants, please join me in welcoming our Dr. Aishwarya ma'am. एक बार जोरदार तालियों से ऐश्वर्या मैम के लिए. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐश्वर्या मैम हमारे साथ पहले भी लेक्चर 20 सेशंस रहे हैं. सो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चाहूंगी मैम कि हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. Okay. मैम शेयर योर पीपीटी प्लीज. Yeah, actually there is some network issue, so I am just switching off my video. If there is any doubt, you can please stop me anywhere. Okay. Yeah, actually I'm getting a call from Dr. Sanjay. I'm just speaking to him. Yeah, please excuse me. Good morning, Sanjay. So the screen is visible?
Yeah. Can somebody please respond whether the screen is visible? Yes, ma'am, yes. Okay. Okay. Yeah. So, good afternoon, everyone. So, first of all, I would like to thank Dr. Sanjay and the College of Lakauti for this opportunity. So, I think this is the third time that I am going to deliver a lecture on, like, earlier it was on psychometrics. So, today I will be dealing an interesting topic. Already you had different sessions on digital detox and social media. So today, just to conclude, I will be speaking on social contagion and the spread of misinformation in the digital age. So it is one of the most powerful and dangerous phenomenon of the digital age, like how the ideas, emotions, rumors, and misinformation is spread online like a contagious virus. So you, as you all know, social media has completely transformed the way we communicate, learn, and even think. So yes, you all used to use your Instagram, Facebook, everything. So you know how it will influence the millions within minutes, right? So today, in this aspect, we will be speaking. So as you know, this misinformation today is no longer just a communication problem. It has become a psychological, technological, and a social challenge. Earlier, information passed means when we were using the newspapers, when we were using the radios and magazines and all, it passes through the editors, journalists, right, before reaching the public. But now you know that anybody can be the consumer and anybody can be the producer, and it has led to the spread of false information. So false information spreads extremely fast because it triggers, as you know, the emotions, fear, anger, excitement, and curiosity. So it has led to psychological biasness and a complex platform of algorithm, right? So with this, coming to the objective. So at the end of this session, I hope you will be able to understand what is the concept of social contagion, how it operates in the digital environments, and you will see the difference between misinformation, disinformation, and malinformation. You will also be examining the psychological mechanisms that make people vulnerable to viral content. Finally, we will be analyzing the algorithms, how we can be a responsible citizen. So, coming to the concept of social contagion, I think you already might be knowing related to the diseases, how it is spread. It is spread from one person, like communicable diseases, right? It is spread actually very fast from one person to another. Like if suppose you are having some viral fever in your class, so if one person sneezes, it is for sure that the next day all of you will have the like at least the person who is having the low immunity, they will have the disease, right? So similar way, social contagion, it is just nothing but the spread of ideas, emotions, and behaviors through social interaction, and it mimics the spread of infectious disease. That's why it is known as social contagion. Okay, so it is spread through rapid transmission through networks, automatic behavior imitation, and emotional synchronization. Okay, so how this is like phenomenon is created, how traditional media is different from the digital media. So if you see, traditional media and digital media operates very differently. In case of traditional media, information is passed through professional gatekeepers, right? Earlier, I was speaking about the editors and journalists. Before publication, before you are going to do something, it is being verified, right? But in case of digital media, this kind of verification is not there, right? It is participation is open. And if you see the flow of information in case of traditional media, it is very slow and periodic, right? In case of magazines and all, it might be monthly, it might be like after annual. So the major issue with this means it is always slow, right? Whereas in case of digital media, when you post a reel, it is instantly transmitted, right? So verification happens before publication, right? Whereas in case of digital,
Sometimes it never happens. Otherwise, sometimes some people tell, yeah, this is an AI generated media, right? So this is the thing. Then in case of traditional media, reaches from one person to many person. But in case of digital, it happens from many to many, right? So the major issue this time is at this era is virality has become more powerful than credibility. More than means earlier the credible source of information, that is the trustworthiness of an information, was more important. But now people are giving more importance to the virality, right? People want it to become viral, right? So this is one thing. So there are different types of false information if you see. So first one is known as misinformation. So misinformation is like sharing of false information without any harmful intention. For example, you are forwarding an outdated health remedy believing that it is useful. You might have seen this during the COVID time, that consuming garlic daily will reduce the will reduce the means the COVID impact. This way they were telling. So then another one is known as disinformation. It is deliberately created to deceive people, like political propaganda and fake news campaigns are an example, right, for this. Now another one is malinformation, which is most dangerous one. Here what happens is means information is used maliciously to harm individuals or groups, such as leaking the private data to damage reputation. So these are the three types of information. One is misinformation, second one is disinformation, and third one is malinformation. All the three things are wrong, but if you see more, malinformation is comparatively more dangerous because it leads to the damage of reputation. Okay, so now coming to the next slide. So why the false information spreads fast? So research have shown that the false information spreads faster than the truth because it is emotionally stimulating and it is novel, and human psychology naturally responds more strongly to shocking or surprising content. Right? You all might be knowing that when somebody tells you rumor about someone, you might be more inclined towards than listening to somebody discussing about the subject matter, right? Because we are more stimulated towards these kind of contents, right? This is a psychological phenomenon. So, and another thing is that you might have heard of confirmation bias. Can somebody tell me what is confirmation bias? Any idea? What is confirmation bias? Yeah, Jyoti, are you people there? Yes, yes, ma'am. Yeah, so any idea what is confirmation bias? Sorry, ma'am. We have no idea. Okay, so it is like we try to search the information that matches our opinion, right? We tend to believe people's information that matches exactly to our opinion. Suppose, for example, now you might be knowing election had happened in certain areas of India. So people, for example, who supports BJP, they try to listen the news that is related to BJP, like positively related to BJP, right? This is a kind of confirmation bias. Means we tend to listen to the things that are related, means matching our existing opinions, right? And one more thing is that fear and anxiety increases our emotional reactions. So that is one of the other reason for spreading our misinformation. Then another one is group identity will make people support information shared by their own community. So you might have seen, you have WhatsApp group, you have Facebook groups. So all these groups are created based on your group identity, right? Because you share some commonness. That's why this is there. Now, in addition to this, you have seen that the internet creates a cognitive overload where people consume too much information too quickly, reducing their critical thinking, right? So we try to grab more information at a time, so we lost the logical thinking ability. So we don't know which is the correct one or which is the false one. So we tend to be more inclined towards spreading the misinformation.
so fastly. So if you see about social contagion, this is actually more like the first person, like Gustave Le Bon, has studied crowd psychology, and he showed how individuals behave differently within a group. So in case of your class also, you might have seen some people are having means even you have some kind of commonness, still you people have different personalities, right? So he was the first person to give the social contagion theory, and there is you also might have heard of Gabriel Tard. So he has given the concept of imitation in society. People tend to imitate the other people. So this you might have studied in case of diffusion of innovation. Then another one is known as Albert Bandura. So he is famous for observe others and you learn from them, right? So research has shown that the false information spreads faster than truth, and social contagion theory explains how behavior and emotions spread through observation, imitation, and reinforcement. Right? So now coming to the emotional contagion. So I have already told, this kind of misinformation used to trigger our emotions. So emotions are actually the fuel for virality. So negative emotions such as anger, outrage, panic, and fear spread much faster online than calm and balanced discussion. This you might have seen every time. Mostly the negative information spread more quickly than the calm and balanced discussion. So when users emotionally react to a post, they are more likely to be shared immediately without verification, right? This creates digital mob behavior where collective anger escalates rapidly. So what happens in this case? In this case, it leads to more because means people tend to form two groups, right? So one will be the supporters, one will be the opposers, right? So obviously this kind of negative information will create more, it will lead to more hate campaigns. So this is tend to be more viral compared to the balanced emotions, right? So this is all about the emotional contagion. So next comes, what is the role of algorithm here? So algorithms are invisible systems that decide what content appears on our feed. Their primary goal is maximizing user engagement, not necessarily promoting the truth, right? So when users interact with sensational or emotional content, algorithms push that content to, you can see here, algorithm, when it is factual content, much of visibility is not there. But when it goes to sensational content, people are more inclined towards that, and people want sensational content rather than the factual content. So this creates an algorithmic loop. So engagement will lead to promotion, which increases visibility, generating even more engagement, right? So this is the role of algorithm. I think you actually there is a short it is like a short video in YouTube. It is on social contagion. In you can just search that in. I hope all of you have Netflix, so you can see it is a very good documentary kind of thing. It is on social contagion. So you can just see that this Netflix documentary came during the COVID time. So you can see how you also might have seen, if suppose you are going to search more related to cookery videos, then when you open Instagram, the algorithm will be more towards your cookery videos. That means actually the algorithm is more trained towards whatever you are watching. And there is also something called as I have told, sensational content. So sometimes you will see that the things that you are not interested, even that will come, but later you become addicted to that, right? So
this is all the algorithm made by this AI people. Okay, so we should not be a victim for these kind of things. So we should be rational enough to understand that these are sensational content. Like, we all are educated people, so we should try to have maintain that balanced emotion and don't fall into that kind of pit. Okay, so that is the basic idea behind this presentation. So now coming to something called as echo chambers and filter bubbles. So it is like, if you see, filter bubble is nothing but when algorithms selectively show users content similar to what they already like or behave. Over time, users, what will happen, it will means people will stop seeing alternative viewpoints, right? We will be only seeing the content related to the one which we are interested to. So see, you can make this filter bubble which is similar to, which is like in a constructive way. Suppose you are going to search videos related to educational videos, so obviously you will be seeing only educational videos. Otherwise, if you wanted to see some negative, like as I have said, more political propaganda or some kind of negative emotional triggering videos, if you are seeing, then obviously you will be seeing only that kind of things over time. So it is up to us to give the filter. So this is one thing. Now next comes like echo chamber. So echo chamber is something when people repeatedly interact with only like-minded communities. So inside these spaces, beliefs will become reinforced continuously. So what will happen? This will reduce critical thinking and it will increase polarization. Like, you will make your own one chamber where you will be speaking only with the people to whom you are interested. So you might have seen in a group of 50 people, you will have your own circle. So they will tell, no, show me your friend and I will tell you what is your character. Because that means to the people with whom you are interacting, they will tell you whom you are like, right? You will be that what will happen to that, you will be only speaking the content which is more interested to you, and you will be speaking only one side of the thing. You will not understand the other side of thing, and you will be again more biased and you will be more polarized. So this is about the echo chamber and filter bubble. So our duty is to break this chamber and bubble and come out of this and try to be constructive and listen to only the positive aspects of digital age, right? Now coming to the digital opinion leaders. So in digital age, you have seen that influencers, there are many influencers who have become opinion leaders. Billions of followers trust their recommendations regarding this health, politics, finance and lifestyle, right? This trust is often, if you notice, it is not a social trust. It is actually para-social trust, because you are making them, you might have seen, there are many, I have seen most of the girls are like inclined towards this, what is it, fashion followers, fashion influencers, right? What happens? They will be showing different, you might have seen that they will be recommending different skin creams, everything, and later, but when you try, it will not give you the good results. Sometimes it will also give you negative this thing. So that means it is not a social trust, it is actually leading to parasocial trust, which will make you vulnerable to unverified claims, right? Sometimes you can see even they are giving health advices without having a formal degree. So the problem is that popularity is frequently mistaken for the expertise. You might have seen, when that's why they do the advertisements. Earlier, the advertisements were being done by the film stars and all. So why is it so? So it is not because of the their expertise. It is because of their popularity, right? A person with millions of followers will not have any scientific knowledge, but like there will be no factual accuracy, but millions of people will be following them, right? This is not because of their logic or rationality. It is just because of their popularity. Okay. So now coming to the fake news ecosystem. So as you can see, fake news follows a cycle. First, false content is created intentionally or unintentionally. Then it spreads virally
through shares and reposts, algorithm and influencers amplify it further. Eventually, repeated exposure causes people to accept the truth. So the more frequently people see a claim, the more believable it appears, and this is known as illusionary truth effect. So there is a concept called as illusionary truth effect, right? So more viral it is, it will be more amplified, it will lead to more amplification, and the false claim will become more acceptable, and this is known as illusionary truth effect. Okay, actually this is not true, but it is going to create an illusion. Now you can see something called as deep fakes and AI. So you can see that AI generated media, like nowadays the people who are smiling, they can create the same individual in a like crying mode. He can means the male can be created as a female, the female can be created as a male. So the potential, it is often used for means bias and all for positive this thing, but it can lead to political manipulation, it can lead to character assassination and sophisticated fraud. So nowadays we are unable to understand whether the image is AI generated or not, right? So there is something called as the concept of infodemic. So you might have heard this infodemic because during COVID pandemic, the WHO used the term infodemic to describe the overwhelming spread of information, including the false information. Means infodemic. So demic means the spread, and info means information spread. So infodemic. So it is the spread of information, even including the false information. So you, in this case, as I have already discussed, examples are like fake health remedies. Then there were also anti-vaccine narratives were there. Then there were many conspiracy theories. They were telling this COVID-19 is from this country, that country. So this were like creating a conspiracy and misinformation related to treatments, right? This shows how misinformation can directly affect the public health. It can lead to panic and reduce trust in the science. So you might have seen during COVID, there was something called as panic buying. So that means they will be telling like these items will not be there, so try to get it at the earliest. So people started going to supermarket and purchasing the things like anything. So that had led to panic buying. Now you can see there is a shortage of gas, so it has spread like anything. So people have started, even if they were having the gas connection, they started applying for the new connection. They started applying for the gas. The new, they were placing order for the new connection, new gas. So this is all known as infodemic. Okay. So there is something called as social media and mob violence. So in several countries, false rumors spread through messaging platforms, which has triggered the mobile violence and not mobile violence, mob violence. Mob means a group of people having a like that means a group violence is known as mob violence. Okay. For example, like a fake child kidnapping rumors circulated rapidly through WhatsApp groups. It has created the panic and distress. So this kind of fear plus rapid forwarding and community trust can transform digital disinformation into real world violence, right? This kind of misinformation just not only lies with the people, it will create panic and it will lead to some violence in certain areas. Like you can see, it has led to burning of the cars, burning of the buildings, then harming people. So this kind of things. So there is something called as political misinformation also. So there might be something called as, you might have seen troll armies, right? Means there will be some people making troll against the other people, right? They will be doing micro targeted propaganda, so to manipulate the people's opinion and create distrust. So just before the elections, they used to do all this trolling and all. Then they will be having something called as bot networks, which are artificially created
which will amplify the political narratives to create an illusion of widespread support. Means it will they will be generating artificially. They will be what is that? You might have seen the likes and share. So it is automatically being created for for manipulating the people, or to create the polarization towards a particular party. So misinformation is also causing harm in case of politics. It is also, as we have read, it is also causing harm in case of health. So there are many issues related to this thing. So it has, all these things has led to erosion of democracy. So then there is something called, you might have seen, memes, right? Memes are something which appears as humorous and harmless, but they are something, you all have been inclined towards watching memes, right? So it is, though it appears to be very simple and harmless, but they are actually powerful communication tools, right? So this kind of humor will reduce our critical thinking and defense mechanism, and we try to share these things, means, right? It may not be logical, but still we try to spread this. So this is also a kind of misinformation. So who is at the major loss? It is the youth. So what happens? Youth will be highly exposed to this digital environment. So you might have already dealt with this topic of digital detox, how to control your screen time and all. But all this misinformation will lead to high screen time and more social media dependent. So you will have a fear of missing out, right? It is known as FOMO. FOMO is a major issue with the social media users and with the youth. So what has it led to? It has led to a desire for social validation. So means mostly people will be looking for more likes, shares and subscribers rather than having interaction with the people, right? They will be, as I have told, they will be forming their own echo bubble. Like they will be within their own chamber, and they don't want to come out of that thing. So you have that fear of missing out, and you will be seeing your friends, and if they are posting a video or something, you will be seeing how many likes they have got and why I didn't get that many likes. So this is all the symptoms of fear of missing out, right? And there is something called as psychological. What is the psychological? What are the psychological consequences of this? One is information fatigue. Means you will be, as I have told, you will be overloaded with so much of information, which is known as cognitive overload. Then you will have burnout at a stage. Then it will lead to anxiety and fear. As I have told, you will be checking for some viral content. It may create some kind of anxiety, it will create fear, which happened during the COVID. And now also during the war, they were spreading some negative information. So this is again leading to some kind of anxiety and fear. Then I have already told social polarization. Nowadays, many people have lost their empathy. They are more polarized towards, all this misinformation makes you polarized towards a certain thing. And then institutional distrust. So this is a major issue because, see, you are going to listen to your influencers. Means you are going to give importance more to the popularity rather than the subject matter experts. See, some, as I have told, people during COVID time also, people were more listening to the advices of your celebrities rather than the advices of medical professionals. You can see even now, people are not listening to the dermatologists or what are the creams that they suggest. You are more inclined towards the celebrity suggestions, right? This is informational distress. So major consequences are information fatigue, anxiety and fear, social polarization, and institutional distrust. Okay. Now, coming to
something called as bot and trolls. So you already have, means you are already aware of this. I have already told. There is something called as automated bot. So what happens is this programmers, they creates an like account which will automatically spread and like share the things that is provoking conflict and confusions online. So it is not done by the person as such, it is done by the bots. Like they will be creating artificially multiplying the contents, negative contents. Next comes the trolls. Trolls are nothing but the human agents who intentionally provoke conflicts and confusion online. You might be knowing, oh, you already know. There are trolls related to Modi ji, related to Rahul Gandhi. So this way, like they create the trolls to create the polarization, and you try to share it based on the party that you support. Right. So they will artificially amplify the narrative and create the illusion of consensus. Consensus means everyone believes that this is correct. So this false sense of consensus strongly influences the public opinion. So this is what is known as bot and troll. Now comes digital herd behavior. So there is something called as follow the crowd. So what is the meaning of that? It means people tend to follow the crowd, right? So when people see a topic trending or widely shared, they assume that it is true, and because of the social pressure, they try to conform to that. Means they try to believe to that. So what people do? People don't try to confirm it. Means you don't try to validate it with your fellow person, right? You don't try to verify whether this information is right or wrong, but you share this content. So this is also means this is known as bandwagon effect. That means if everyone is believing it's true, means yeah, it must be true. You don't try to verify it. So there is something called as media literacy. So this is the only way. How means now we have seen what are the various means consequences of means what is social contagion. Then we have also seen how it is going to influence us and what are the negative aspects of this. So the only way to defend this misinformation is media literacy. So users should learn to question the sources. Earlier, you know, during our school days, during your college days and all, we tend to ask multiple number of questions to our teachers. Now I was listening to the previous listener. You never tried to question. Means you didn't have any question, right? So this is because we have lost something called as critical thinking. So you should have that rationale to understand what is right and what is wrong. So you should learn to question the source, what is the evidence, and the emotional intention behind every viral post. So this is our responsibility to do that. Like who created this content, what evidence is there, right? Is the source reliable? And we should also have something called as fact checking. Means you should have some cross verification tools and there are official sources, right? So you should try to verify it with the subject matter content or subject matter person before you are going to share it. Yeah, so this is the only way to be a responsible citizen, right? And how to spread means how to stop spreading the misinformation. Okay, then are different fact checking tools. Like one is Snoops. So they have like several organizations have developed several tools. Like one is Snoops, then one is Alt News, then it will prevent on political and communal misinformation. Then another one is factcheck.org. So you can utilize all these things before you hit the share button, right? Then there is something called as ethical responsibility. Like we all are responsible citizens. So combating misinformation is not just the responsibility of one group alone. It is individuals. Means we should try to
individually we should try to verify before sharing any information, and the platforms must improve transparency and algorithmic accountability, right? And it is nowadays it is told that even governments are promoting the propagandas and this kind of misinformation, right? So government should also support digital literacy, and there should be some policy frameworks. So as again I am underlining that ethical online behavior always requires responsibility, patience, and critical thinking. So if you see, technology itself can also fight misinformation. So AI-based fact-checking, deepfake detection tools, blockchain verification methods are some of the emerging tools. So as you know, technology alone cannot solve the problem. It is our responsibility. It is the ethical digital behavior that is most important. Means it is equally important of means with technology also, right? It is not only AI-based fact checking; it is our individual responsibility to do this, right? So at the end of this session, I have only 4 things to highlight. One is social contagion shapes our digital behavior unconsciously. So it is our responsibility to critically think and consciously avoid this kind of misinformation. Emotions drive virality more than factual accuracy. So give importance to factual accuracy than emotions. And algorithms decide what you believe by controlling what you see. Okay, so don't allow the algorithms to control you. It should be you who have to control. And digital literacy is a required survival skill in the modern age. So be a responsible citizen. And these are some of the topics of discussion. I know none of you are interested to discuss, so I will share the slide so you can just see. So before I finish, so as I have already told, misinformation is not just about the technology. It is a psychological and ethical this thing. So thank you everyone for the kind attention and participation. And I hope after this lecture, means you might have understood how digital information ecosystem influence emotions. And my last appeal to you is always remember that before sharing anything, you pause, you verify, and think critically. Every user contributes to shaping the digital environment. You should not be the person to spread the misinformation. So thank you everyone. Special thanks to Dr. Sanjay for this opportunity. Yeah. Thank you so much, Aishwarya ma'am. The lecture was well structured and so productive for all of us. So now I would like to invite Divya ma'am for vote of thanks to our Aishwarya ma'am. Please, ma'am. Thank you very much, Aishwarya ma'am. इतना well structured ये lecture था कि we have learned a lot of things on you. इसमें मुझे जो खास बातें लगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे स्टूडेंट्स ने समझी होगी, इवन हमने भी समझी है, info tag. That was absolutely new term for me, so I learned it from you. Misinformation may lead to disastrous conditions. And this is very much prevalent nowadays. हम लोग जिस लूप में फंस जाते हैं, उसी information को algorithm हमें create करके देता है. So we should be very conscious for this. हमारे ऊपर उसका psychological भी एक pressure बनता है, और हम कुछ influencers से भी influence हो जाते हैं बिना professionals की, experts की advice को जाने. मतलब even हम उनको ignore कर देते हैं. So ये चीजें बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं जो मैम ने हमें बताई. And one of my favorite points you have noted down here, FOMO and JOMO. FOMO तो हम सब बात कर ही रहे थे, लेकिन जो JOMO आपने बताया वो innovative और बहुत ही नई बात मुझे लगी. So thank you very much for this. Psychological जो consequences होते हैं, overload of information, and information fatigue, anxiety and fear, social polarization, and institutional distrust. These are the things which we should
understand, we should mention on such platforms जहाँ हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपने ये बातें इतनी सटीक और इतनी सही तरीके से हमारे स्टूडेंट्स के बीच में रखी कि हमारे लिए भी एक लर्निंग कंटेंट है। And bots, false application, digital herd behavior जो कि बहुत prevalent है आज के टाइम में, बहुत चल रहा है। And media literacy जिसके लिए आज हम इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, जो हम सब समझ रहे हैं, बहुत काम की चीज है। एंड वन थिंग आई मिस्ड, आपने 3 चीजें बताई थी फैक्ट चेकिंग के लिए, स्नोस, एज न्यूज़, एंड थर्ड वन आई मिस्ड, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिपीट दैट थिंग। एथिक्स रिस्पांसिबिलिटी जो हम सब आई होप इस कॉन्फ्रेंस के बाद फॉलो करना शुरू कर देंगे। एंड द लास्ट quotable line, pause before you post. It warmed my heart, and thank you very much, ma'am, for sharing the wonderful knowledge. That was absolutely stunning and enlightening lecture. Thank you so much, ma'am, for being with us. Thank you. Thank you so much, ma'am. So just as a closing remarks, so those 3 tools are Snopes, Old News, and factcheck.org. So these are the 3 things. One is Snopes, Old News, and factcheck.org. And thank you so much. And special thanks to I missed your name, madam. So thank you so much. At least I hope one person listened. And it is a fault from my side. I am unable to communicate in Hindi. Actually, my Hindi is not that good, so that's why I couldn't speak Hindi. Otherwise, I could have taken the class in Hindi. So I am from Kerala, so my Hindi is not that good. So that's why I could take. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, ma'am. As sir is not available right now, they will connect you soon for felicitation. So thank you so much. भैया थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे आप।